Great to see you all here. And I know most of us have spent the entire day managing the work, family, responsibilities, and everybody's expectations around in the office or at home, whatever, you know. And but how many of us actually take a pause and check how are you feeling? What are your mindset and your emotions? Have you ever taken that pause to analyze where we are? Yes, okay. Anita is doing, Shrikala is doing. Anybody else? कभी अपने लिए पॉज लिया है कि यार मैं क्या फील कर रहा हूं? You can also type it in the chat box. Okay. So those who don't know me, I'm Dr. Uma here, and I'm very happy to begin this journey of emotional release and inner balance with all of you. Okay, and today the theme of the session is calming the stress. And why I chose this topic today is because I feel that stress जो है हमारी life का, I think English will be okay, right? Everybody understands? Hindi, English, right? Perfect. Perfect. So why I chose this topic of the stress? Because हमारी life का एक normal part बन चुका है. We have normalized the stress word and the term in our life कि ये तो normal है, right? But we don't realize that how much pressure it is putting on us. Yeah? ये जो stress है कहाँ से आ रहा है? Have you realized? ये stress हमारे day to day activities से आ रहा है, work pressure से आ रहा है, financial stress हो रहा है, relationship issues हो रहे हैं, family responsibilities और health issues specifically, and painful past experiences, the baggages which we are holding on our shoulders. So everything is giving us the stress. और अगर आपको कोई भी stress नहीं है तो daily routine का stress है, बच्चों को स्कूल भेजने का stress है, right? Everybody has stress. कितने लोगों को stress है यहाँ पर, right? Nobody is free from stress, and that is why it is so important to talk about it and to release it on a daily basis, ताकि वो हम अपनी body में accumulate ना करें. Because how stress shows up in our body, हमारी body में stress कैसे show करता है? Can anybody answer? आप unmute कर सकते हो. कैसे show करता है कि stress है? Frustration. Sorry? Frustration. Frustration, absolutely, yes. और कुछ? Lack of sleep, anxiety. Yes, sleep, lack of sleep, disturbed sleep, anxiety, overthinking, irritation, unnecessary thoughts, emotional eating, Yes. yes, taking food as a comfort, or body pains, right? सुबह उठकर when you wake up, yes, lacking energy, and when you wake up in the morning you still don't feel fresh and good, feeling sad without reason, yes. So these are all, समझ जाओ कि stress कहीं ना कहीं है, whether you accept it, whether you try to divert it, कि forget about it, कुछ नहीं हुआ, just I have to be positive. So by saying all these words, do you think we are overcoming our stress? Postpone कर दिया हमने stress को, कुछ event हुआ आपकी life में जिससे आपको थोड़ा सा hurt करा, थोड़ा सा bother करा, और फिर आप बोलते हो कि यार कोई बात नहीं, just forget it, हो गया तो हो गया, I will not think about it now, I will move on in my life. But क्या वो सच्ची में आप move on कर पा रहे हो? Whenever a small thing again comes in your life, it triggers you again. आप फिर past में चले जाते हो, अरे यार ये तो हुआ था. Yeah? So triggering point comes again and again, despite you telling yourself कि I have moved on. और ऐसा क्यों हो रहा है? We may try to ignore the situation consciously, but हमारी जो body है, that continues to hold the stress. Okay? And whenever the brain sense the threatening situation, या लगता है कि कुछ uncertainty है, कुछ अजीब सा लग रहा है, you are not feeling comfortable in that particular situation or a place, तो एकदम आपका जो stress response system है body का, वो activate हो जाता है, right?
We have all heard parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system, right? तो आपका जो sympathetic system है वो एकदम activate हो जाता है, you know, hormones जैसे हमारे cortisol है, adrenaline है, वो सारे के सारे release होने शुरू हो जाते हैं to tackle that emergency. Now what is this emergency? The stress situation. But on a short term, this is very important. Cortisol हमारी body के लिए बहुत important है, हमें बचाता है वो बहुत सारे प्रॉब्लम से, सिचुएशन से. अगर सामने आपके यू नो लायन आ गया, शेर आ गया, तो अब वो इमीडिएट आपको जो है भागना है या छुपना है, जो भी करना है, तो उस टाइम तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपको सेव करेगा, आपको हेल्प करेगा, राइट? बट अदरवाइज अगर ये ऑन ही रहे, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम अब बंद ना हो और वो चलता ही रहे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगी. और आजकल की लाइफस्टाइल में एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है वो एक्टिवेटेड ही रह रहा है, इसीलिए हमें जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्टॉप दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारा चलता ही जा रहा है इवन व्हेन द सिचुएशन इज गॉन, right? Even when the situation is gone, and that mind and that system doesn't allow our body and mind to relax and recover. And that is where you start seeing नींद नहीं आ रही है, रात को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, यू आर फीलिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग, इरिटेबिलिटी आ रही है. तो ये सारी लैक ऑफ मोटिवेशन इज अनदर थिंग विच यू एक्सपीरियंस व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन अ सिंपैथेटिक मोड, राइट? और आप इसको एक सिंपल से और एग्जाम्पल है, एज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हेयर, सो एक और इसका एग्जाम्पल है, आप यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रेसफुल डे एट योर जॉब और एट योर वर्क. ओके, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, आप घर पर आ गए हो, यू आर एट होम, बट यू हैव गॉट दैट थॉट्स इन योर माइंड कि व्हाट विल हैपन टुमारो इन द मीटिंग, what my manager will tell in the meeting, whether my job will be safe or not, whether I will be able to complete my targets or not. ये सब आपके माइंड में चल रहा है. And when these are all running, and how many have experienced this? Whether you are running a business or whether you are doing a job, right? Your body is at home, but your mind is still in the office and running, right? So what happens after that? Now tell me your story. What happens? Your body is at home, your mind is at office. क्या result है उसका? How you will cope up now? You will start looking out for your comfort food. क्योंकि आपको उस पैटर्न से बाहर निकलना है, वो फीलिंग से बाहर निकलना है, एंजाइटी की फीलिंग से. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम या तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, खूब सारा खाना खा लेते हैं, फेवरेट फूड अपना ऑर्डर कर देते हैं, एंड वी स्ट्रगल टू रिलैक्स. हमें फिर नींद नहीं आती, हम बेड पर लेटे हुए हैं पर दिमाग चली जा रहा है, वी आर नॉट एबल टू रिलैक्स अवरसेल्व्स. ऐसा होता है, ऐसा ही होता है. कुछ मीठा खाना तो अच्छा लगता है. एग्जैक्टली, कंफर्ट फूड है ना वो आपको एकदम शांत रिलैक्स कर देता है. अरे यार कुछ तो मेरा है, अभी तक तो टेंशन ही चल रही थी, बट अभी लेट मी हैव दिस, राइट? एंड देयर इज, फिर आप जैसे तैसे करके आप 2-3 घंटे सो गए रात को, दो योर स्लीप वॉज वेरी डिस्टर्ब. नाउ व्हेन यू हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप एट नाइट, हाउ यू विल बिहेव इन द मॉर्निंग? नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बॉडी कैसा बिहेव करेगी और आप कैसे बिहेव करोगे? चिड़चिड़ा, इरिटेटेड, वेरी टायर्ड, yes, energy level is very low, and patience is also reduced. Yeah, actually. And there is no motivation to do any exercise. Not at all. Not at all. And follow a healthy routine. Can you do that in that condition? आपके माइंड में आएगा कि यार अभी तो मुझे प्रोटीन वाली आइटम खानी है, अभी मुझे इसके साथ वेजिटेबल्स भी खानी है? नहीं आएगा. एक्चुअली कुछ भी करने का टेम्पो नहीं रहता. एब्सोल्युटली, बॉडी बहुत डल हो जाती है. लेकिन तो डॉक्टर ये लेने के बाद से ये जो मतलब रूटीन में चलने से खुद को बहुत लाइन में ला सकते हैं. थोड़ा तो मेरे को तो पहले से बहुत स्ट्रेस भी कम हुआ है, एनर्जी लेवल भी आया हुआ है. चलिए बहुत अच्छी बात है, दैट इज गुड. बट जनरली क्या होता है कि अगर आपका
स्ट्रेस, पिछले दिन का स्ट्रेस अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कंडीशन एग्जैक्टली यही रहती है कि हमारे में कोई मोटिवेशन नहीं है, हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमारा माइंड जो है वो हाईजैक हो चुका है। हाईजैक किसने किया हमारा माइंड? हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी ने। यस, एंड नाउ अब आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो ट्रैफिक में आजकल आपने देखा है कि देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स वेयर people are directly hitting the other person if they are coming on the way, or road rage basically I'm talking about. आजकल इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है, राइट? एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? अगेन दे आर मेंटली एग्जॉस्टेड। तो एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट अगर आपके स्पाउस के साथ भी हो जाती है सुबह, तो दैट लीड टू इरिटेशन, राइट? एंड दैट इज हाउ एक के बाद एक स्ट्रेस चढ़ता रहता है। लेयर ऑफ स्ट्रेस इज हैपनिंग, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, फिर रिलेशनशिप पे आ गया वो स्ट्रेस, एंड दैट इज हाउ इट इज लेयरिंग अप, लेयरिंग अप, लेयरिंग अप। तो यू आर थिंकिंग दैट आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, but you are now stuck in the loop. Okay, so one source of stress can begin to impact your sleep, your eating habits, your relationship, energy, focus and overall health. देखा, एक छोटे से इंसिडेंट ने आपका पूरा का पूरा all areas of your life actually got impacted because of this one small thing. अब आप बोलोगे ये स्मॉल नहीं है, आई अग्री, ये स्मॉल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। ओके, आप सेम एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस का ले सकते हो, आप रिलेशनशिप स्ट्रेस का ले सकते हो। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेशनशिप इशू, हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज गो बैक इन द पास्ट एंड रीप्लेइंग द ओल्ड कन्वर्सेशन वी हैड। अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, अब हम फिर से दोबारा पीछे जाएंगे, अरे तुमने पहले भी ऐसे ही किया था, राइट? सेम विद द फाइनेंशियल, हम अपना कैलकुलेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस, फिर फ्यूचर प्रॉब्लम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगा। सेम विद द इमोशनल पेन। सो हमारी बॉडी जो है वो अलर्ट जोन में ही चल रही है। ओके, वी ट्राई टू फॉरगेट द प्रॉब्लम बट वी आर नॉट गिविंग द बॉडी अ क्लियर सिग्नल कि वी आर सेफ। हम अपने माइंड को तो बोल रहे हैं नथिंग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आई हैव मूव्ड ऑन, forget about it, think positive, but हमने अपनी बॉडी को अभी वो सिग्नल नहीं दिया कि we are safe. And that is why today's session is important, where we are going to give signal to our body that we are safe. Okay? So what we are going to do is, we are going to acknowledge it that the situation which I am going through is creating stress for me. Because most of the time what I have seen is we don't want to acknowledge also. हम acknowledge ही नहीं करना चाहते, हम वो बात ही नहीं छेड़ना चाहते जो पास्ट में हो चुकी है, बट वो स्टिल आपको कहीं ना कहीं हॉन्ट कर रही है। We try to ignore it, but today we will not ignore it. We have to address it. We have to acknowledge it. Okay, we have to acknowledge it again, not to hurt ourselves. Okay, and not to forget about it, but to handle it in a much more matured way. So that if the same incident occurs again in the future, we don't go back again. वो हमारा trigger point ना बने. Okay? So that is the whole intention here. Just a moment. Yes. Okay. Yeah, तो वो हमारा triggering point ना बने. So we have to acknowledge that yes, this situation is creating stress for me. My mind and body are feeling this pressure, and the purpose of today's session is not to solve every problem, but the purpose is to reduce the emotional intensity which is connected with that stressful situation which you had faced or which is going on, whatever you want to sort it out. Okay, so that we can think more clearly and respond in a very healthier way, because when the mind becomes calm, we are more likely to sleep better. Because I keep hearing कि दिमाग चलता रहता है, रात को बंद ही नहीं होता है, right? But when we keep, when our mind is calm, you will see, you will sleep better, you will be able to make better decisions and handle your emotions more effectively. Okay? So how we are going to do that now?
we are going to do tapping. Now, what is that tapping? So it's a you can say it's a Chinese practice. Okay, in Chinese traditional Chinese medicine, आपने acupressure, acupuncture का नाम सुना होगा, जी, right? तो वो जब आप करवाते हो, anybody experienced it? Acupressure, acupuncture, experience नहीं करा. Acupressure में क्या होता है, वो pressure देते हैं आपके points पर, जो energy points हैं वहां पे आपको pressure करके release करते हैं जो भी आपका physical pain है, right? That is acupressure. Acupuncture में क्या कहते हैं, वो needle डालते हैं, आपने देखा तो जरूर होगा. They do the needling at the energy points. तो चाइनीज मेडिसिन ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था एक्यूप्रेशर का, जिसमें वो व्हाट दे बिलीव इज कि हमारी बॉडी में जो है ना एनर्जी पाथवेज है, जिनको हम मेरिडियन पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो, जहां पे एनर्जी आपकी फ्लो होती है. ओके, वी ऑल नो द चक्रास वी हैव इन आवर बॉडी, राइट? सो सेम वे वी हैव चक्रास इज अ ब्रॉडर वर्ड. मेरिडियन उससे भी छोटे लेवल पे आ जाता है कि वी हैव मेरिडियंस, वी हैव एनर्जी पॉइंट्स जहां से हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है. एंड व्हेन वी गो थ्रू स्ट्रेस या फिर फियर या इमोशनल पेन या ग्रीफ, जो भी आपका एंजाइटी या स्ट्रेस का जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, राइट? तो क्या है, हमारा जो सिस्टम है, जो एनर्जी फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो ब्लॉक्ड हो जाती है at those major points. And by tapping those meridian points, we can actually release that energy, the stuck energy which is there. Okay, and it is scientifically also proven कि आप जब tapping करते हो तो you can control your cortisol by 50%. और अगर आप वो practice करते जाओगे, so you will feel much better and you will be able to release those stuck emotions which are there in your body, because mind and body and soul all are interconnected. How many of you agree that? सब agree करते हैं, है ना? एक सुपर पावर तो है ही, एक सुपर पावर है जो सोल से कनेक्टेड है, फिर बॉडी है, फिर माइंड है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि हमारी जो वेगस नर्व है वो हमारी गट से लेकर दिमाग में जा रही है, राइट? And that is where the all pranayam and everything comes in, meditation comes, and there was a research on the meditation कि जब आप meditate करते हो तो आप जो है past trauma से बाहर easily निकल जाते हो. And there was a study conducted on the veterans, the war, जो war हुआ था पहले के ज़माने में, जो जर्मन वॉर हुआ था हिटलर के टाइम पे, नाजीज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा जहाँ जिन्होंने लड़ाई करी थी, दे वर अंडर ट्रॉमा, मतलब पूरी पूरी रात वो सो नहीं पा रहे, चिल्ला रहे, बिकॉज दे हैव सीन सो मच ऑफ द ब्लड शेड. तो उनको जो है मेडिटेशन के थ्रू दे हैव कम टू द नॉर्मल लाइफ, दे केम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, बिकॉज द ब्रेन वेव्स जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो इमोशंस आपके दब गए थे, उनको धीरे धीरे वो बाहर लेकर आए और फिर उन इमोशंस को रिलीज करा. एंड दैट इज व्हाट द टैपिंग डज. व्हाट टैपिंग डज इज, जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो आप भूलने की कोशिश कर करके वो पीछे बैक सीट पर चले गए हैं, तो टैपिंग के थ्रू हम उनको एक्नॉलेज करते हैं. बिकॉज क्यों हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं उनको? बिकॉज दीज आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स जो बार बार कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर जाता है. वही गुस्सा पहले जैसा वापस आ जाता है. आप सोचते हो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बट फिर से वो गुस्सा आ जाता है, राइट? फिर से वही नेचर जो हमारा था वही बाहर वापस आ जाता है, राइट? बिकॉज एट सबकॉन्शियस लेवल दे आर एग्जिस्टिंग. सो वहां से हम निकाल के उसको कॉन्शियस लेवल पर लेकर आएंगे, एंड दैट इज वेयर स्लोली वी एक्नॉलेज एंड वी विल रिलीज इट. या सो दिस इज all about tapping today. And one thing we have to remember, that we are not forcing any memory to come out, and neither we are trying to erase the past. We are simply giving our mind and body a safe opportunity to process what has been held inside, and which always comes at when certain events happens in our life or certain emotional triggers happen, right? So we want to get rid of that so that we can lead a healthy, happy life. Okay, so now are we guys ready to release any emotion, any pain, whatever you are having in your mind, in your body? Any pain if you are having, you want to release that body pain. Okay, if you want to release any emotional pain, any emotion which you are holding, so think about it.
Okay, think one situation that is causing stress, anxiety, overthinking, emotional heaviness for you. एक situation. There can be multiple areas where you need to work on, but as of now, just take out one situation, one triggering point that causes the stress, anxiety, overthinking. जो भी आपका जो है इशू है, जो आप रिजॉल्व करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम मुझे हमेशा हो रही है एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, ये मुझे बहुत स्ट्रेस देता है. कैन वी थिंक ऑफ दैट? सोच लिया सबने? टेक 1 minute, थिंक अबाउट इट. You can type it in the chat box what you want to release. Any emotion which is related to relationship, anything related to body pain, anything related to work pressure. Yeah, what else? Anything related to finance. Anything which is giving you stress and anxiety. ठीक है? Are we all ready with one problem? One emotion जो बहुत आपको हॉन्ट करता रहता है, आप उसको सोच के आपकी नींद उड़ जाती है. Take that emotion. And now what I want is you have to feel that emotion. Okay? When you think about that incident which happened with you in the past or which is happening, which is causing that stress, think about it. Not in a very complete story कि आप एकदम ही शॉक में आ जाओ. Just a small incident. Okay, not the complete story around it, but a small incident. You can think about it and tell me where you are feeling in your body. अगर आप उस इंसिडेंट के बारे में, उस बात के बारे में सोचते हो जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको बॉडी में कहाँ पे फील हो रहा है? आर यू फीलिंग इट ऑन योर शोल्डर? हैवीनेस इन द शोल्डर, हैवीनेस इन द चेस्ट, हैवीनेस इन द स्टमक, हैवीनेस इन द हेड? वेयर यू आर फीलिंग दैट सिचुएशन और इमोशन इन योर बॉडी, कहाँ पे आप उसको फील कर रहे हो when you are thinking about that stress? Please type it in the chat box. या बताओ कहाँ पे फील कर रहे हो आप वो इमोशन. चेस्ट एंड आर्म्स, ये नोट करना बहुत जरूरी है बिकॉज आफ्टर द टैपिंग अगेन आई विल आस्क यू हाउ यू आर फीलिंग. ओके, सो आप उस चीज के बारे में सोचो जो आपको स्ट्रेस दे रहा है और ये देखो कि आपकी बॉडी में वो कहाँ पे फील हो रहा है. When you think about it, where you are feeling it in your body. Give me a thumbs up if you have already, you know it, where you are feeling it. You know? Perfect. Okay, perfect. Now, you know that emotion, you know where you are feeling it in your body. Now, I want to know what is the intensity of that pain from 0 to 10. अगर आपको फिजिकल पेन हो रहा है तो थोड़ा सा और उसको बढ़ाओ. अगर आपकी कमर में दर्द है तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे वो थोड़ा सा और बढ़ जाए. एंड टेल मी व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट पेन फ्रॉम 0 to 10. अगर इमोशनल पेन है तो कहां पे है वो इमोशनल पेन, कितनी इंटेंसिटी है उस पेन की. इंटेंसिटी ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10. 9. So, okay. Anybody else? आपने इमोशन जो स्ट्रेस दे रहा है, आपको ये भी पता है कहाँ पे फील आपको हो रहा है, आपको अभी उसकी इंटेंसिटी भी पता चल गई है कि yes, it is, I'm feeling it 9 whenever I think about it, when it comes into my mind, or it's 10 on 10, or it's 5 on 10, जितना भी है आपकी इंटेंसिटी आप बताओ. ठीक है, चूज वन वर्ड. स्ट्रेस है, फियर है, एंगर है, गिल्ट है, प्रेशर है, कंफ्यूजन है, क्या चीज है वो? ओके, सो वी आर ऑल डन विद दैट. गिव मी अ थम्स अप. ये 3 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक है ना? ऑल राइट, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द टैपिंग नाउ. ओके, तो फर्स्ट टैपिंग पॉइंट जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, कराटे चॉप. एक कराटे हम ऐसे खेलते हैं. This is the point. With the 4-finger we will tap here. This will be the first point. ठीक है? So we will start
working on this point. We'll start tapping on this point. And before tapping, let's take a deep breath. Release it through your mouth. We will take 2 more deep breaths. Last. And release. Yeah. I'll play some background music as well. Okay. Perfect. Sound is okay, right? It's not very loud? Perfect? Perfect. All right. So let's start with the tapping. Okay. And say it along with me. And it is specifically, I'm targeting the stress. Okay. Whatever is your emotion, whether it's fear, whether it's anxiety, whether it's relationship, you have to use that. That even though I feel deeply stressed and overwhelmed, I accept how I feel right now. Even though my mind and body are carrying too much pressure, I am open to release it gently. Even though part of me is finding it difficult to relax. If you have a body pain, you can say because of the body pain or back pain or joint pain, whatever is causing the pain. If it is a relationship, you can talk about with this relationship. We have to be a little specific, okay? Find it difficult to relax. I choose to create a little calm and safety in this moment. Take a deep breath. Move your arms up and down, release. Okay. Now the second tap point is between your eyebrows, where your eyebrows are starting. Okay, you can use one hand, 2 fingers, gently tap on your eyebrow area. This pressure, you can also say this pain feels heavy, and my mind feels overloaded. Keep looking at me because now the point will change. Next, on your side, that bone is there. Lightly tap there and say it with me. This stress that keeps activated even with a small trigger. Now under eye. Again, there is a bone in under eye, right? Tap there, little. I keep thinking about everything that could go wrong. My mind is finding it difficult to switch off. Now under nose. I have been holding this stress for a long time. Part of me feels overwhelmed. Now under the chin, this crease is there, there under the chin. My body has been carrying this pressure, this mental overload for so many years. You can be specific, for last couple of months, for years. Yes, keep doing. Next, we will move to the collarbone. This bone is there, just below it. My nervous system have been on alert for a long time, with one hand or 2 hands, whatever you feel comfortable. I feel mentally and emotionally exhausted. Now under the arm, here, not under the arm completely, just 4 inches below the underarm. I feel tired
from managing everything. And there is too much pressure inside me. Now on your head, again with forefinger, on your crown area, I'm trying to keep everything under control, and I don't know how to pause. Now take a deep breath again, hands up, and release. And release. So now tell me, guys, what is the intensity you are feeling now? Has it dropped down? Whatever was the intensity you were feeling before starting this tapping, has it reduced by a number or anything? You were feeling that emotion in your body, right? On your chest, on your arms. How you're feeling now? I think it is decreased by the number. How much? It was not very. It was not too much before, Yeah. but now it is decreased by one. What was the number? What was the number before? 4? 4. And now it has come down to? I think it's 2. Very good. Awesome. Hmm. So we are not yet done. We have just acknowledged it. अभी तो हमने acknowledge किया है कि ये pain है, ये overload, mental overload है, which I am holding it. Okay? Now, again, let's start. I'll just play the music. All right. So now we'll start with the eyebrows. Okay? Now say it along with me again. Everybody knows the intensity now. Intensity सबको पता है अभी अपनी? Perfect. Now let's release it now. हमने पहले acknowledge करा, अब हम release करेंगे. All these suppressed emotions which I have been holding inside for so long, release. On the side, this stress or this pain that keeps getting activated, release. Under eye, any action of mine which is increasing this stress or pain in my body, release. Under nose, any thoughts which is causing this stress, release. Under chin, any drama which happens in my life because of this stress in my life, release. Now on your collarbone, anything in my life which is causing this stress, release. Underarm, any situation causing this stress, any experience in my life which is causing this stress, release now. On your head, any belief around this stress which I am holding and which leads to more stress, release. Now take a deep breath and release. Release, guys. So now tell me the intensity. So Anita has mentioned from 9, it has come down to 6. Very good. Who else?
Yes, Monica, from 2, anywhere it has gone? Or I it's 2? think it is 2 or 1, between 1 and 2. Half, it has reduced by half point. Yeah. Okay. Perfect. Perfect. Anybody else? There was And- something very amazing that while doing that, suddenly I was totally blank. There was nothing, and it was very beautiful feeling. Yes. So that means for a few seconds it was zero actually. Absolutely. So I this is magical because you have acknowledged your past emotions which were haunting, and you are trying to release it now. And now we will be giving the calming statement to ourselves. And when we keep practicing it, keep releasing it, it's not about a bigger emotion you have to release, bigger pain you have to release. No, everyday basis also we can do this to release the day-to-day stress so that it doesn't accumulate in our body. Yeah? Perfect. So again, we'll do the last round with the calming statements. I've shared the music. All right, guys. So are we all ready? We know the intensity now. Show me a thumbs up. Perfect. All right. Now we have to create the calm. We will again start with the eyebrows. I hope you now know the points. I will not tell the points. You can just look at me. I'll just say the statement. You also say the statement along with me. Okay? I choose calm and clarity. I allow my mind to slow down. I choose one step at a time. I do not have to solve everything now. I trust myself to manage what comes. I'm ready for it. Under nose. I allow my body to relax. I'm creating a healthier response. I choose peace over unnecessary pressure. My mind is becoming quieter and I'm feeling happy. On your head, I feel grounded, supported, and balanced, and I'm safe in this moment. I am safe in this moment. Now come to the karate point. As we are closing it, so we have to come to the karate point to close it, to close that emotion and pain. Okay, even though this stress I have been holding in my life for so long, and I'm ready to release it now. I'm ready to release it now. Take a deep breath. Release now. Yeah? So yes, how was it now? Feeling better. Very good. So what was the intensity before? Let's compare it with the intensity. पहले कितना intensity के साथ वो pain आप अपनी body में feel कर रहे थे, but अभी क्या intensity रह गई है उस pain की? From 8 to 3. 8 to 3, fantastic. Awesome. Anybody else? Yes, I have experienced good release. Very good. कितना intensity से कितना intensity पर पहुंच पाए आप? मुझको लगता है 10 से 5 तो हो गया. Very good.
वेरी गुड. आज सो पाएंगे? लग रहा है. I'm sure. Absolutely. So we have to keep tapping. Even a small change. See, it all depends कि हम कितने टाइम से वो होल्ड करके बैठे हैं अपनी बॉडी में. Healing is different for different people. The time span is different for different people. Right? So even if it has dropped even by 0.1, it is good. Something is better than nothing. हमने शुरुआत की है अभी. एंड हर चीज जो है वो शुरुआत से होती है.